In September 2000, the United Nations Assembly unanimously adopted the UN Millennium Declaration. It was an 8-goal agenda that all 192 member states agreed to adopt. We, the humanity of the third millennium, have achieved that technological, economic and political progress from where we can no longer justify hunger and the exclusion of millions from basic health and education. In 2000, the international community acknowledged that it has a duty to recognize the fundamental rights of those who are being excluded from the benefits of progress. At the United Nations Assembly, all countries committed themselves to a work agenda that would tackle the most evident factors of poverty and injustice. They set 8 goals. They set 21 targets. They set timelines. They allocated funds. And in order to verify if they were being honest with their commitments, they set a number of indicators upon which they asked to be judged. And for the first time in world history, a concrete work agenda for the rights of the voiceless was universally agreed. The MDGs today provide a framework for the UN system and for synergizing the various international cooperation activities in a coherent worldwide effort. The MDG targets have become an integral part of the global indicators for development. Each year, an annual report is prepared that assesses the progress made by member states in fulfilling the pledges they made. Although the UN has a key role to play in addressing the challenges and in tracking the global progress towards these goals, it is national governments that have the responsibility to achieve the Millennium Development Goal targets. Thousands of programs and projects have been operational, involving a large amount of human and technical resources. However, the resources and efforts have proved to be inadequate, and the progress towards the achievement of the Millennium Development Goals has been uneven and slow. Many countries finally did not allocate the resources they had committed to, and the international media did not pay much attention to the MDGs, so the public is little informed about them. In this documentary, we will observe projects on the ground and see what developing and developed nations are doing in order to contribute to the achievement of the MDGs. Very few people are aware about the Millennium Development Goals, the most important commitment taken by the international community to reverse grinding poverty, hunger and disease affecting billions of people across the world, to bring economic and social justice to the most deprived, marginalized and vulnerable populations across the world. We are a group of organizations, European and non-European, implementing a project that has been co-financed by the European Commission. This project is called YOGAD, European Citizens Working for the Global Agenda for Development. The Millennium Development Goal 1 aims at removing the factors responsible for poverty. Most developing countries have good rates of economic growth, but the gap between the rich and the poor is widening. The proportion of people living on less than $1 a day has decreased, but 925 million people still suffer from chronic hunger. 1 in every 4 children in the developing world is still underweight. In the world, 25% people still live on less than $1.25 a day. And there are countries like Liberia and Sierra Leone where high percentages of the population still live in misery. We interviewed the staff of organizations that receive these funds and implement the projects. We also met people who benefited from these projects, and we collected their stories. India is a country in South Asia. In size, it is the 7th largest country of the world, and it is the 2nd most populated with over 1.2 billion people. It is the most populous democracy in the world. 4 of the world's major religions, Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism, originated here, whereas Zoroastrianism, Christianity and Islam arrived in the first millennium. India has been able to include all its different features in a multi-form but integrated civilization. However, communal, caste and regional tensions continue to be the challenges of Indian politics, sometimes threatening its long-standing democratic and secular ethos. In terms of nominal gross domestic product, the Indian economy is the world's 9th largest, and it is the 4th largest by purchasing power parity. The country has a burgeoning urban middle class and has made great strides in the fields such as information technology. Its large, skilled workforce makes it a popular choice for international companies seeking to outsource work. However, it continues to face the challenges of poverty, illiteracy, corruption and inadequate public health. The vast mass of the rural population still remains impoverished.
बहुत कुछ आल हुआ, बहुत कुछ बदलाव आल बा। हमने काम करत है, पैसा बा तो बहुत कुछ कर लेवल जात है, न पैसा रहत न काम करी तो कुछ न कर पाई। आदमी से पैसा मांगू पेट चलाएगी तो वहाँ गहना गुड़िया खरीदा के पैसा देगी। बाकी हमने अपन आराम से ले लेवल जाला, गहना गुड़िया खरीद के पहन भी लेवल जाला, पढ़ा जात हो, लिखा जात हो, सब कुछ हथला भैया। कौनो दिक्कत अब हमने के होला ना कि हमने के पास तो पैसा होला अब हमने बिना पैसा का नहीं, जैसे हमने के पास 200-400 मान लो उनमें काम 1000-2000 के कैले फिर भी बचल बा तो छोड़ ले बा, तो कभी जरूरत पड़ले पर ओके निकाल लेवल जाला, अपन काम पूरा कर लेवल जाला। जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना चल रही है पूरे 10 जिले में, उसमें से वाराणसी एक है। तो गांव की महिलाएं सशक्त हों और वो अपने हक अधिकार में भागीदारी सुनिश्चित करें, उसी के अंतर्गत महिलाएं नरेगा में काम कर रही हैं। नरेगा जो है ये एक संविधान है, लोगों को 100 दिन का, एक परिवार को 100 दिन का काम उसको गांव में ही मिलना चाहिए जो काम का हकदार है। नॉन स्किल लेबर्स जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है कि वो अपने गांव में ही रह के उनको काम मिले और वो बाहर माइग्रेशन ना हो, और गांव का विकास भी होगा उससे, और गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिलेगा। हमने के संगठन में हमने के कुछ पैसा कौड़ी निकाला बदे कुछ बतौलीन मैडम एक जने हमने के पढ़ले रहने में अपन कुछ हमने के बतौलीन हमने बैंक जाइला तो अपने मर्जी से कुछ पैसा निकाल लेला आराम से, फिर पैसा निकाल के लेके घरे आवल जाला तो बहुत कुछ काम कर लेवल जाला। उससे लड़कन के ई भल की प्राइमरी में पढ़ा के छोड़ दा, पैसा नहीं बा कैसे अब भारी स्कूल में पढ़ावल जाई, तो हमने बोली कि हमने अपने आदमी से तू बच्चन का खर्चा चलाओ, हमने नरेगा में काम करब तो हमने अपने बच्चन के पढ़ाई। अरे बहुत आगल, अब इतना हो गल कि तहाँ के खाद पियत ना रहल, ओखत दवाई के नहीं रहल, तहाँ हम लोग इतना ओखत दवाई के समझ कि पैसा कौड़ी के सब कुछ आ गल। बनी मजूरी से ठीक बा, दिन भर बनी मजूरी करें और ओकरे बाद अब देखा नरेगा के बाद दिन भर अपन करके आदमी काम कर लेता, बच्चा खिया लेता, पढ़ा लेता, लिखा लेता। तहाँ बोला डोला के बा वहाँ तनी पढ़े तो नहीं बा एको तक हमने, बाकी प्रधान लोग के थोड़ा बहुत छुगा देवल जा। महिला स्वरोजगार समिति के अंतर्गत हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं उनको नरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। रेखा दीदी हमारे गांव के महिलाओं को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताई हैं, उनको कितनी मजदूरी, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई खनना चाहिए, मिट्टी कितना दिन का काम है, ये सारी जानकारी हमारे गांव को इस महिला स्वरोजगार समिति के माध्यम से बहुत अच्छा प्रतीत। हम संगठित नहीं होंगे जब तक हम लोग संगठित, क्योंकि एक आदमी की तो कोई आवाज़ सुनता नहीं है, लेकिन अगर हम सब लोग इतने लोग एक अच्छे तरीके से कानूनी भाषा में एक अधिकारी के साथ जाएंगे तो हमारी बात जरूर सुनी जाएगी। हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और 4 जगह अपनी अहमियत, घर में, समाज में, पंचायत में और सरकारी सुविधाओं में। जब वो समय हमारे गाँव में एक संस्था है महिला स्वरोजगार समिति, वहाँ से 2 लोग अलन। वो समय तो हमने ठीक नहीं लगल भैया कि पता नहीं कैसन लोग, कभी हमने घरे के बाहर निकलना नहीं भी तो कहाँ जाना कि का होला बाहर का दुनिया। तो उस समय तो हमने पता नहीं कैसन लोग बा, हमने का कहीं पैसा जमा कर जाता लेके भागो न जा। उस समय नहीं इतना तक कि कितना बार लोग हमने मना कैले पर भी आवत रह गलन, तो हमने के लोगन अपने फायदा बदे आवलन। हमने का कर अपन समय बर्बाद करल जाए, काम कर ले, चूल्हा चौकी की इनकर बात सुन ली, बाकी मना कैले पर नहीं मानते न, फिर बार बार आवाज से हमने तो थोड़ा दिमाग देके ये समझ में आल कि नहीं जो लोगन कहते न सही है। ओकर बाद हमने समूह बना ले भैया, समूह बना ले और छोटा मोटा हमने के समूह में पैसा भी आ गल। फिर वहाँ से भैया हमने के एक नारी समूह बनल,
नारी संघ जब बनल भैया तो हमने शक्ति जो ना बढ़ गई वहाँ से, शक्ति बढ़ गई। ओकरे बाद हमने के तब वो समय ही लगल कि हमने शायद अपने जो चार दीवारी की जिंदगी से बाहर निकल के ये दुनिया में हमने के थोड़ा सा अपनी मर्जी से जिए का हक भी मिलल और दूसरे के भी वो हक दियाव का हक मिलल और सब औरत के अपनी मर्जी से जिए का समझ हो जा। कहीं ना कहीं जब से देश आज़ाद हुआ महिलाएं अपने हक से वंचित रही हैं। तो एमएसएस का मानना है कि जैसे पुरुषों को हर जगह घर में, समाज में और सरकार में उनकी भागीदारी रहती है, उसी तरीके से महिलाओं की भी भागीदारी उन्हीं के बराबर मिले। तो इसमें महिलाएं पहले संगठित होती हैं, फिर उनकी छोटी छोटी ट्रेनिंगें होती हैं, उनके अंदर लीडरशिप आती है और वो अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ती हैं। और फिर जब उनको पता, उनके अंदर जब एक लीडरशिप आ जाती, कॉन्फिडेंस आ जाता, तब उनको पता चलता है कि नरेगा एक कानून है जिसमें हमारा सहयोग करना और उसमें जिसकी ज़रूरतें हैं वो हक पाना भी जिम्मेदारी एज ए पंचायत के नागरिक होने के नाते महिलाओं की भी ड्यूटी बनती है, लोगों की भी ड्यूटी बनती है। चैलेंजेस तो ये हैं कि घर से बाहर निकलना महिलाओं का, यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज तक वो घूंघट में रही हैं, जो हमारा भारतीय संस्कृति है। तो उनसे घर से बाहर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।